Jai Hind students, how are you all? I hope you are healthy and happy. So today we are going to learn Science chapter 5, Light and Sound. This is a very easy and interesting chapter. In this chapter we are going to learn about the light and sound. So let's start our study. Earth supports life because it receives plenty of light and heat from the sun. अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर इट सपोर्ट्स लाइफ वाई बिकॉज ऑफ द सन we receive light and heat. That's why we are able to suffer. Light enables us to see objects around us. This we know that lights क्या हेल्पफुल है. लाइट की वजह से हम हमारे आसपास की चीज़ें देख सकते हैं. Plants, animals, and all other living organisms need light to survive. Not only we humans, but plants, animals, and all other living organisms. Organisms means कि दूसरे जीव, उनको भी क्या चाहिए, छोटे से छोटे organisms को भी they need light to survive. We hear sound all around us. We can hear sound. हमारे आसपास में जो भी छोटा से छोटा स्लो साउंड होता है that we can hear. Sound enables us to communicate with each other. Sound से क्या होता है कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर पाते हैं. Sound is produced due to vibration of objects. कोई भी ऑब्जेक्ट में साउंड प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन. Most of the sound that we hear reach our ears through vibrations in the air. जो साउंड हम सुन रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग हियर एंड यू आर लिसनिंग दैट. हाउ? बिकॉज आपके मोबाइल में से जो साउंड प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो एयर में, अगर आपने एयर प्लग या हेडफोन नहीं लगाया हुआ है और आप स्पीकर से मुझे सुन रहे हो, देन हाउ इट कैन बी पॉसिबल. जो साउंड मोबाइल में से निकल रहा है वो आपके एयर में वो मिक्सअप हो जाते हैं और वो वाइब्रेशन से यू कैन हियर माई वॉइस. In this chapter we will learn about these two components, lights and sound. First, light. Sun is the main source of light and heat on the earth. You can underline this statement. What is the main source of light and heat on the earth? Sun. Sun is the main source of light and heat on the earth. Life would not be possible without sun. So we can imagine the life without sun. Sunlight gives energy and warmth to every living thing. Sunlight कोई भी living thing के लिए बहुत ही ज़रूरी है because it gives energy and warmth. It takes about 8 minutes and 20 seconds for sunlight to reach the earth. So how much time sun does take to reach the earth? 8 minutes and 20 seconds. You can underline this statement that it means sun takes about 8 minutes and 20 seconds for sunlight to reach the earth. Objects that give out light. जो ऑब्जेक्ट मीन्स कोई जो चीज़ें जो हमें लाइट देती है, उसके थ्रू हमें लाइट मिलती है, आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. यू कैन अंडरलाइन दिस डेफिनेशन. इन एग्जाम I can ask as a definition that what are called luminous object. Luminous object. Objects that give out light are called luminous object. For example, the sun, candle and lamp. These are the examples. Sun से हमें क्या मिलता है? Light. Candle, we can get the light. Lamp, get the light. So these are the luminous object. Now, objects that do not give out light are called non-luminous object.
जिस ऑब्जेक्ट से हमें लाइट नहीं मिल रही है, these are the solid thing which do not give out light are called non-luminous object. For example, paper, table and bed. There are so many other examples, but here three examples are given here. Paper does not give out light. Table does not give out light. Bed does not give out light. These are the non-luminous object. Once again, what are called luminous object? Object that give out light are called luminous object. And what are called non-luminous object? That objects that do not give out light are called non-luminous object. Now the other topic is light travels in a straight line. So लाइट जहाँ से भी प्रोड्यूस्ड हो रही है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही हमें वो ट्रैवल करती है, वो स्ट्रेट लाइन में ही हम देख सकते हैं. So light travels in a straight line. You can underline this statement. Light travels in a straight line. It cannot bend around the corners. Light कॉर्नर्स में से बैंड होके टर्न होके हमें नहीं मिलती है. इट ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन. यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट द स्ट्रीम्स of light coming through clouds or trees travels in a straight line. आपने अर्ली मॉर्निंग जब सनराइज होता है तब जो ट्रीज में से जो सन रेज मिलता है, आपने देखा होगा कि वो एकदम से स्ट्रेट लाइन में ही मिलता है. सी हियर क्लाउड्स में से जो सन रेज आ रहे हैं, इट मीन्स सन प्रोड्यूस द लाइट, बट लाइट सन रेज इज अ स्ट्रेट, नॉट इन बैंड नहीं हो रहे. वो कैसे आ रहे हैं? अर्थ पर स्ट्रेट. इट मीन्स लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. सी ट्रीज में से जो सन स्ट्रीम्स आ रही है, रेज आ रहे हैं, you can able to see that it all travels, it produce in straight line, not in a bend. So light travels in straight line. Now reflection of light. When the light falls on a smooth shiny surface like a mirror or a polished metal surface is bounced back. This is called a reflection of light. जब लाइट कोई भी एक शाइनी सरफेस पर लाइट पड़ती है तो क्या हो जाता है? वो बाउंस बैक, वो हमें वापस मिलती है, उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है. आप लंच टाइम में जो जिसके पास स्टील के लंच बॉक्स होते थे तो लंच टाइम में आप ऐसी मस्ती बहुत करते थे ना कि सन रेज में सन के टुवर्ड्स आप वो लंच बॉक्स रखते थे, शाइनी सरफेस, एंड वो लाइट किसी को बाउंस बैक होता था. तो सेम एज मिरर रखने से भी वो इट बाउंसेस बैक. So this is called the reflection of light. So when light falls on a smooth shiny surface, any type of smooth shiny surface like a mirror or polished metal, any type of polished metal जिसका surface कैसा होना चाहिए? Shiny. So light bounces back. This is called reflection of light. When the reflected light enters our eyes, we can see the object that reflects it. जब reflected light हमारी eyes में enter होती है, then we can see the object that reflects it. There are three types of objects: opaque, translucent and transparent. So there are three types of object: opaque, translucent and transparent. So when the light hits a surface and cannot pass through it, जब कोई भी सरफेस पर लाइट पड़ती है और वो पास थ्रू नहीं होती है, इट कैन बी एनी सॉलिड थिंग. अगर आप बुक में टॉर्च से लाइट
डालते हो तो बुक में से लाइट पास नहीं होती है, वो दूसरी साइड लाइट पास नहीं होती है. सेम इज एल्यूमिनियम फॉइल, वो दूसरी साइड लाइट पास आउट नहीं होती है. दिस मीन्स दिस ऑब्जेक्ट्स आर ओपेक. नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ light to pass through them partially are called translucent. दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट्स ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट? कि जिसमें से लाइट पास थ्रू तो होती है बट नॉट क्लियर, अनक्लियर वे में पास आउट होती है. यू कैन सी द शेडो और यू कैन सी द पार्शियली पार्ट, एकदम से नॉट अ क्लियर पार्ट, थोड़ा थोड़ा. सो दीज आर द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. सेम टिश्यू पेपर, गोगल्स एक्सेट्रा. The objects through which light to pass through them completely are called transparent. For example, glass water. In the glass water, white glass of water, you can see the water clearly. So these are the transparent objects. So here we have learned three definition. What are the opaque object, what are the translucent object, and what are the transparent object. So once again, what are the opaque object? When the light hits a surface and cannot pass through it, the surface is called opaque. Second, the object which allow light to pass through them partially are called translucent. And third, the object through which light to pass through them completely are called transparent. So here one picture is given there, reflection of light. The person with the mirror, वो मिरर कहाँ पर रख रहा है? सन के सामने, एकदम से सन के सामने. देन लाइट्स इज कमिंग फ्रॉम द सन. सन रेज कहाँ पर हो रहा है? रिफ्लेक्शन कहाँ पर आ रहा है? मिरर पर. एंड इट बाउंसेस बैक. यू कैन क्लियरली सी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट बाउंसेस बैक. So let's do one activity that show that light travels in a straight line. So here we have to take 3 rectangular cardboards A, B and C. 3 cardboards लेने हैं A, B and C. Make a small hole at the center of the cardboards at the same horizontal level. Horizontal एक ही लाइन में आपको सेम होल्स करने हैं तीनों कार्डबोर्ड में. Place the 3 cardboards horizontally in a such a way that the 3 pin holes are in a straight line. तीनों होल्स एक ही हॉरिजेंटल प्ले में होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में. Place a burning candle on the side of a cardboard A at the level of hole. A होल के बाजू में आपको एक बर्निंग कैंडल जलानी है. Now make sure that you have arranged the 3 cardboards and a candle in a such a way that 3 pin holes and the candle flame are exactly in a straight line. Now observe the candle flame through the hole of a cardboard C. C में से आपको observe करना है कैंडल की फ्लेम को. And you will able to see the flame of a candle as a holes are in the straight line. फ्लेम कैंडल की फ्लेम आपको स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगी. नाउ स्लाइटली डिस्प्लेस एनी वन द कार्डबोर्ड. कोई भी एक कार्डबोर्ड को डिस्प्लेस कर दो. एंड you cannot able to see. So here the conclusion is that light travels in a straight line. Okay. Hope you understood the activity that light travels in a straight line. Now one exercise is there. State whether the following statements are true or false. So here first is objects that give out light
are called non-luminous objects. So this statement is false, that objects that do not give out light are called non-luminous object, and the objects that give out light are called luminous objects. Second, lamp is a luminous object. So this statement is right, true. Lamp is a luminous object. Third, light travels in a straight line. So this statement is also correct, true. Fourth, the objects which allow light to pass through them are called opaque object. The objects which allow light to pass through them are called transparent object, not opaque object. The object which do not allow light to pass through them are called opaque object. So this statement is false. We can see non-luminous object in the presence of light. So this statement is true. In the presence of light, we can see any object. It can be luminous or it can be non-luminous. So this statement is true. So here students, I have one small clip to understand the difference between transparent, opaque and translucent. So let's see. So first is transparent. All light passes through. Transparent में क्या होता है कि विंडो में से पूरी लाइट पास हो रही है and we can able to see leaf clearly. Then translucent में some light passes through. Glass में से क्या हो रहा है, some light pass हो रही है. And opaque में a solid object is there and we cannot see. Here car. First car A, B, C, there are three cars. First is transparent, we can see clearly. B, we cannot see clearly. And C, we cannot see the car. So first is transparent. Now the another example of swimming pool. These swimming pools are transparent and another is opaque. And the same example of water bottle. The water bottle is transparent, that translucent, and the black one is opaque. So you can see the transparent water bottle. The window, we can see the temple clearly. We cannot see that girl clearly and we cannot see anything. So this is the opaque. We cannot see. So first is transparent, second is translucent, and third one is opaque. Now the next topic is sound. Sound can travel only through a medium. Sound, कोई भी medium through you can see, you can hear. Sound is sensational created in the brain by vibrations. कोई भी sound produce होता है, it creates a sensational vibration in the brain and we can hear the sound. Like light, sound travels through the air in the form of waves. We hear all kind of sounds with the help of our ears. Irregular sound waves create noise. You can underline this statement. The irregular sound waves create noise, while regular and repeating sound waves produce musical notes. So here the types of sound. So there are different types of sound: pleasant, unpleasant, soft और loud. Soft sound, जब आप एक दूसरे से अच्छे से स्लोली बात करते हो, दिस इज द सॉफ्ट साउंड. अनप्लेजेंट साउंड, जब ट्रैफिक में जब हॉर्न्स ब्लो होते हैं, दिस इज द अनप्लेजेंट साउंड. एंड प्लेजेंट साउंड, जब कोई बर्ड की आवाज़ आप सुन रहे हो, इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग ना, सो दिस इज़ अ प्लेजेंट साउंड. एंड लाउड साउंड, लाउड स्पीकर की वॉइस, जो this is a loud sound. Now the
Time to answer. Match the following. First, pleasant sound. The answer is sound of a flute. फ्लूट का साउंड कितना स्मूथिंग होता है ना. We like to hear this sound. So this is a pleasant sound. Second, unpleasant sound. So barking dog. डोगी की जो आवाज़ आती है भौंकने की, दिस इज़ अ बार्किंग डॉग वॉइस इज़ अ टोटली अनप्लेजेंट साउंड. एंड द थर्ड वन, loud sound of a loudspeaker. This is a loud sound. So here in this chapter we have learned some definitions. Luminous object that give out light of their own. Non-luminous objects that do not give out light. Reflection, bouncing back of light from a smooth shiny surface. Opaque, light cannot pass through it. Translucent, allowing light to pass through partially. And transparent, allowing light to pass through completely. Noise, irregular sound waves. So in this chapter, now I know that light enables us to see objects around us. Sun is the main source of light and heat on the earth. Light travels in a straight line. Bouncing back of light from a surface is called reflection of light. We hear sound all around us. Sound can be pleasant, unpleasant, loud or soft to our ears. So here children, we have completed the chapter. If you have any doubt, confusion, that note it down. Friday we will discuss it and I will try to solve it. So till then, thank you. Take care.